The topic we are going to discuss about is alkyl halides, and the subtopic is electrophile, nucleophile, and leaving group. alkyl halides दो टाइप्स के रिएक्शन शो करते हैं. नंबर वन वो रिएक्शन जिनमें हेलोजन एटम को रिप्लेस करते हैं, उन्हें कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस. और दूसरे वो रिएक्शन जिनमें हेलोजन एटम रिमूव होता है, एल्कीन्स बनते हैं, एंड दैट इज नोन एज एलिमिनेशन रिएक्शंस. So what is nucleophile? Nucleophile means nucleus loving species. इसके पास एक अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर होता है और ये बेसिक होता है यूजुअली नेचर में. ये न्यूट्रल भी हो सकता है, नेगेटिवली चार्ज भी हो सकता है. Next is electrophile. It is a species which attracts electrons. Carbon atom of an alkyl group attached with a halogen atom and bearing a partial positive charge is known as electrophile. Electrophile neutral भी हो सकता है और positive भी हो सकता है. So basically it is deficient in electrons. नेक्स्ट इज लिविंग ग्रुप. लिविंग ग्रुप भी एक न्यूक्लियोफाइल ही होता है. इट्स कॉल्ड लिविंग ग्रुप क्योंकि ये जब मॉलिक्यूल से डिटैच होता है तो ये अपने साथ एक अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेके जाता है. If we wish a SN reaction to proceed in the forward direction, the upcoming nucleophile must be stronger than the departing one. अगर आपने कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को प्रोसीड करवाना है इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो जो आपका अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल है वो लीविंग न्यूक्लियोफाइल के निस्बत ज्यादा स्ट्रॉन्गर होना चाहिए. सो हेयर यू कैन सी जो हाइड्रोक्सिल है वो इस पे अटैक करता था कार्बन एंड कार्बन, और ब्रोमीन जो है वो लीव कर जाता है. सो इट्स अ लीविंग ग्रुप. Fluorine, bromine, iodine, and HSO4 negative are the examples of good living groups. OH negative, OR negative, NH2 negative are examples of the poor living groups. So OH जो है वो एक good attacking nucleophile है. Iodine good nucleophile भी है और good living group भी है. Next is substrate molecule. The alkyl halide molecule on which the nucleophile attacks is called a substrate molecule. OH is attacking on this alkyl bromide, so it is called the substrate molecule. Let's discuss a question. Which of the following is not a good living group? And following are the options. The correct option is OH negative, क्योंकि ये एक strong attacking nucleophile है. So this was all about the electrophile, nucleophile, and leaving group. I hope you have understood it well, and thank you so much.